हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय समित देशमुख पे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मिसलिनियस एक्सरसाइज ऑफ द डिफरेंशिएशन एंड इन द मिसलिनियस एक्सरसाइज फर्स्ट पार्ट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. To solve the multiple choice question somewhere we have to use shortcut methods also wherever possible. So let us try to solve the multiple choice questions of differentiation. Now see in the first example, what are the given condition? It is given to us that f of 1 is equal to 3, f dash of 1 is equal to minus 1 by 3, g of 1 is equal to minus 4 and g dash of 1 is equal to minus 8 by 3. And question is to find out derivative of this function under root square of f of x plus square of g of x at x is equals to 1. So we have considered this function. यहाँ पे देखो हमने ये function considered किया है. First we will find out its derivative and later on we will find out derivative at x is equals to 1. तो ये इसका डिफरेंशिएशन निकालने के लिए देखिए ये फंक्शन कौन से फॉर्म में है, अंडर रूट एफ ऑफ एक्स, और हमें पता है डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट एफ ऑफ एक्स क्या है, इट्स डेरिवेटिव इज 1 अपॉन 2 under root f of x into derivative of f of x is f dash of x. So we are applying this standard formula to find out this differentiation. According to this standard formula, see what we will get, 1 upon 2 under root. अब ये जो पूरी टर्म है ये हो गया हमारा f of x, means what we are getting here, square of f of x plus square of g of x into its derivative, into derivative of square of f of x into plus square of g of x. इसका क्या into derivative. Okay, so let us try to find out differentiation of this term. So which is equals to 1 upon 2 under root, ये term as it is रखो. What is the term here, square of f of x plus square of g of x. Keep it as it is, square of f of x plus square of g of x. Now here observe carefully, हम इसका डेरिवेटिव निकालने, स्क्वायर ऑफ एफ ऑफ एक्स. तो क्या होगा इसका डेरिवेटिव, फर्स्ट टेक पावर एज एन कोएफिशिएंट, डिक्रीज पावर ऑफ एफ ऑफ एक्स बाय 1, तो नया पावर क्या होगा, एक से कम किया तो 1 होगा, इनटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स दैट इज एफ डैश ऑफ एक्स. इन द सेम वे वी कैन से दैट डेरिवेटिव ऑफ दिस सेकंड टर्म, फर्स्ट टेक द पावर ऑफ जी ऑफ एक्स एज एन कोएफिशिएंट, डिक्रीज इट्स पावर बाय 1, so new power will be 1, not necessary 1, into derivative of g of x, that will be g dash of x. So differentiation is completed. But question is to find out the derivative at x is equals to 1. तो जहाँ पे भी x दिखेगा, x की वैल्यू हम क्या सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, 1. So replace every x by 1. After replacing every x by 1, remaining part is just to substitute the value and complete the calculation part. Even here we can observe that these 2 and 2 we are able to take common from both the term and it will get cancelled with these 2, means 2 will get cancelled. अभी हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, डिनोमिनेटर में देखो यहाँ पे f of 1 की वैल्यू, व्हाट इज f of 1, 3, तो स्क्वायर ऑफ f of 1 मीन स्क्वायर ऑफ 3 इज 9. यहाँ पे हमें सब्स्टिट्यूट करनी है g of 1, g of 1 की वैल्यू है -4, तो -4 का स्क्वायर बनेगा यहाँ पे 16. चलो यहाँ पे वापस से सब्स्टिट्यूट करेंगे, f of 1 ऑलरेडी भी हमने देखा है कि f of 1 की वैल्यू 3 है, f dash of 1 की वैल्यू, f dash of 1 की वैल्यू है -1 by 3 plus as it is, then substitute value of g of 1 which is equal to -4, g of 1 is -4 into g dash of 1, g dash of 1 is -8 by 3, -8 by 3. Values are substituted, remaining part is just simplification part, so which is equal to 1 upon, अभी यहाँ पे देखिए स्क्वायर रूट में 9 plus 16 is 25 and square root of 25 is 5 into, if you'll observe here denominator of both the terms are same 3, तो डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर की एडिशन, यहाँ पे न्यूमरेटर 3 into -1 is -3 और यहाँ पे -4 into -8 will be +32, so which is equal to 1 by 5, keep it as it is, into यहाँ पे 32 minus 3 is 29 upon 3. So in the numerator we are getting 1 into 29 is 29 and in the denominator 5 into 3 will be equals to 15. So 29 upon 15 means here we can say that D option will be the correct answer.
Now observe the second example. In this case, what is the given function? Y is equals to sec of tan inverse of x, और यहाँ पे भी हमें डेरिवेटिव निकालना है at x is equals to 1. चलो पहले तो ये फंक्शन हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिया है, y is equal to sec of tan inverse of x. Now we are differentiating it with respect to x, so dy upon dx is equals to, observe the function is in the form of sec f of x. sec f of x का डेरिवेटिव है sec f of x की वैल्यू है यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ x इंटू tan f of x की वैल्यू tan इनवर्स ऑफ x इंटू डेरिवेटिव ऑफ f of x यानी tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव 1 upon 1 plus x square. Now differentiation is completed. Question is to find out the value of dy by dx at x is equals to 1. तो हम x की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे. जस्ट ऑब्जर्व हियर, इफ आई एम रिप्लेसिंग हियर x by 1, हियर ऑल्सो आई एम रिप्लेसिंग x by 1 एंड हियर ऑल्सो वी विल रिप्लेस x by what 1. तो यहाँ पे मिलेगा हमें सेक इनवर्स tan इनवर्स ऑफ 1 इज 45 एंड सेक 45 यहाँ पे मिलेगा 45. सेक 45 विल बी इक्वल्स टू √2. यहाँ पे tan और tan इनवर्स इलिमिनेट होगा अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी. tan इनवर्स ऑफ x विल बी इक्वल्स टू x, मीन्स वी कैन से दैट tan and tan इनवर्स विल गेट इलिमिनेट. तो यहाँ पे बचेगा 1 और यहाँ पे देखिए क्या मिल रहा है हमें 1 plus 1 square. 1 square is 1, 1 plus 1 will be equals to 2, means here we are getting 2, means in the numerator we are getting √2 and in the denominator it's 2. तो ये √2 upon 2 की वैल्यू निकाल रहे हैं हम. सो √2 एज इट इज, दिस टर्म 2 इन द डिनोमिनेटर कैन बी रिटर्न एज स्क्वायर ऑफ √2. तो √2 और √2 कैंसिल होगा, बचेगा क्या 1 by √2. सो दिस डिविजन विल बी इक्वल्स टू 1 by √2. सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर हियर. 1 by √2 विल बी आवर रिक्वायर्ड डेरिवेटिव. सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 2. Now observe the example number 3rd. In this case, given function is f of x is equal to sine inverse of 4 raised to power x plus 1 by 2 upon 1 plus 2 raised to power 4x. And we have to find out which of the following is not derivative. यानी ऑप्शन में एक ऐसा ऑप्शन है विच इज नॉट द डेरिवेटिव एंड 3 ऑप्शंस ऐसे कि विच आर द डेरिवेटिव्स. सो वी हैव टू फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डेरिवेटिव. टू चेक वेदर विच ऑप्शन इज नॉट डेरिवेटिव, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन. सो लेट अस डिफरेंशिएट इट, बट बिफोर डिफरेंशिएटिंग हियर वी कैन ऑब्जर्व दैट द फंक्शन इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. तो ऐसे केसेस में हम इसे पहले सिंप्लीफाई करते हैं. तो यह न्यूमरेटर में देखिए क्या है 4 raised to power x plus 1 by 2. According to laws of exponent it can be written as 4 raised to power x into 4 raised to power 1 by 2. अब यहाँ पे ध्यान से देखिए 4 raised to power 1 by 2 means square root of 4 that is equal to 2. और ये जो 4 raised to power x है as it is रखेंगे, यानी न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करके क्या मिला हमें 2 into 4 raised to power x. अब डिनोमिनेटर में 1 plus as it is 2 raised to power 4x को क्या लिख सकते हैं हम 2 square raised to power 2x. This 4x can be written as 2 into 2x. अब ये 2 का स्क्वायर कितना बनेगा 4 और ये raised to power 2x को x into 2 लिख सकते हैं. This 2x can be written as x into 2. Means after simplifying this term what we are getting 4 raised to power x raised to power 2. Now here if you are substituting, here if you are substituting 4 raised to power x is equals to tan theta, see what we'll get here. This implies that theta is equal to tan inverse of 4 raised to power x. ये tan इधर आके क्या होगा tan inverse. Just simply we can say that we have taken tan inverse on both sides. If we are substituting this value, f of x will become, so f of x, observe f of x, that is sine inverse of here 2 4 raised to power x is tan theta upon 1 plus again here 4 raised to power x is tan. तो यहाँ पे मिलेगा tan square theta. So which is equal to sine inverse of, this is nothing but value of sine 2 theta. So now here according to our property of inverse trigonometric function, sine inverse and sine will get eliminated, remaining term is 2 theta. So which is equal to 2. Now I am substituting the value of theta. So what is the value of theta? Tan inverse of 4 raised to power x, tan inverse of 4 raised to power x. This is nothing but value of what? F of x. Now we are differentiating it. F dash of x is equal to 2, keep it as it is. Here observe the function is in the form of tan inverse of f of x. क्या है tan inverse of f of x का डेरिवेटिव? 1 upon 1 plus square of 4 raised to power x, square of 4 raised to power x into derivative of 4 raised to power x. 4 raised to power x का डेरिवेटिव 4 raised to power x into log 4.
तो देखिए यहाँ पे क्या मिला हमें, 2 इंटू 4⁻⁴ इंटू लॉग 4 और डिनोमिनेटर में 1 प्लस 4⁻x का स्क्वायर can be written as 4⁻²x. Now here easily we can say that this is nothing but A option, isn't it? This result is nothing but what? A option. But question is to find out not the derivative. ये तो derivative है, तो not the derivative बोले तो ये गलत हो गया हमारा. अब सेकेंड ऑप्शन में यहाँ पे log 2 है, तो ये log 4 को हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं. सो ऑब्जर्व हियर सिंप्लीफिकेशन. log 4 can I write it as log of 4 can be written as square of 2. According to laws of logarithm, this power 2 can be taken as coefficient. तो यहाँ पे मिलेगा हमें 2 log 2. तो अभी यहाँ पे क्या हो गया, 2 इंटू 4⁻x इंटू ये log 4 को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं. log 4 की वैल्यू है 2 log 2 और डिनोमिनेटर में 1 प्लस 4⁻²x. अब बहुत ध्यान से देखना है आपको, यहाँ पे 2 इंटू 2 4, अब ये हो गया 4 और ये 4⁻x. तो बेस से में तो पावर की एडिशन क्या होंगी, 4⁻x प्लस 1. तो न्यूमरेटर की वैल्यू हो गई हमारी 4⁻x प्लस 1 इंटू लॉग 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4⁻²x. अभी ये तो कहाँ पे दिखाई दे रहा है हमें, बी ऑप्शन में. मीन्स बी ऑप्शन इज द करेक्ट डेरिवेटिव. बट क्वेश्चन इज टू फाइंड आउट नॉट द डेरिवेटिव बोले तो ये हो गया गलत. अभी यहाँ पे सिंपली देखिए, डिनोमिनेटर में 4 का पावर 4 का पावर 4x है, लेकिन यहाँ पे 4 का पावर क्या मिला है, 2x. तो हम डायरेक्टली कंक्लूड कर सकते हैं कि सी ऑप्शन इज नॉट द डेरिवेटिव. और यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे log 2 अगर है तो 4 का पावर x प्लस 1 है, यहाँ पे 4 का पावर x प्लस 1 है, तो यहाँ पे log 2 चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस रिजल्ट. तो यहाँ पे हम ये ऑप्शन अगर हमारे इस आंसर के साथ कंपेयर करते हैं, सो वी विल कम टू नो दैट दिस इज नॉट द डेरिवेटिव. दिस इज नॉट द डेरिवेटिव मीन्स क्वेश्चन इज ऑल्सो टू फाइंड आउट नॉट द डेरिवेटिव. दैट्स व्हाई वी कैन से दैट सी ऑप्शन इज नॉट द डेरिवेटिव, मीन्स सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. Now see the example number 4th. Here the given function is x raised to power y is equal to y raised to power x. So here the given function is implicit function and we have to find out its derivative. So we have considered this function. अभी यहाँ पे अगर फंक्शन ऑब्जर्व करेंगे तो इट इज इन द फॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स रेस्ट टू पावर जी ऑफ एक्स, इधर भी एफ ऑफ एक्स रेस्ट टू पावर जी ऑफ एक्स है. इन सच केसेस to find out the derivative we are applying logarithmic differentiation method, means we are taking log on both side. So simply we have taken here log on both side. According to laws of logarithm, here this power y can be taken as coefficient, so y log x. ये साइड में भी according to laws of logarithm ये power x अगर कोएफिशिएंट में ले लिया जाए तो x log y मिलेगा यहाँ पे. अभी इसे इक्वेशन फर्स्ट बोलेंगे, लेकिन मैं आपको एक इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने की एक सिंपल टेक्निक बता रहा हूँ. ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. इसके लिए राइट हैंड साइड में जीरो होना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए हमने ये प्लस टर्म ये साइड में आके क्या हो गई, ये माइनस हो गई. ओके, नाउ वी आर अप्लाइंग वन शॉर्टकट मेथड टू फाइंड आउट डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड. फर्स्ट राइट डाउन माइनस. ओके, first write down minus. In the numerator differentiate this function with respect to x considering y as an constant. चलो अब differentiate करो इस function को considering x with respect to x considering y as an constant. अभी यहाँ पे देखिए ये y जो है ये y constant है, तो y को as it is रखो और log x का डेरिवेटिव 1 by x माइनस ये log y constant है, log y as it is और x का डेरिवेटिव 1 लिखने की जरूरत नहीं. अब डिनोमिनेटर में बहुत ध्यान से देखिए, अगेन वी आर डिफरेंशिएटिंग द सेम फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू y कंसीडरिंग x एज एन कांस्टेंट. चलो इसे विथ रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करो कंसीडरिंग x एज एन कांस्टेंट. x कांस्टेंट बोले तो log x कांस्टेंट और y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y इज 1, सो नॉट नेसेसरी राइट 1 हियर. माइनस यहाँ पे भी x क्या है, कांस्टेंट, और log y का डेरिवेटिव 1 by y. So differentiation is completed. In the numerator and denominator we are taking cross multiplication. तो यहाँ पे मिलेगा y minus x log y divided by x. और डिनोमिनेटर में अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लेते तो यहाँ पे मिलेगा y log x minus x
upon y. Just simply we have taken what cross multiplication in the numerator and denominator. अब यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर में y माइनस x log y एज इट इज डिवाइडेड बाय क्या है यहाँ पे x. अब यहाँ पे ध्यान से देखिए ये जो y है ये y कहाँ पे शिफ्ट होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर में y, और डिनोमिनेटर में क्या बचेगा यहाँ पे y log x माइनस x. सो ये माइनस एज इट इज, लेकिन हम हमारे ऑप्शन अगर देखेंगे तो कहीं पे भी माइनस नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ ये माइनस से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ. अगेन ऑब्जर्व इट केयरफुली, y माइनस एक्स लॉग y, और डिनोमिनेटर को अगर माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये निगेटिव टर्म हो जाएंगी पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव टर्म बन जाएंगी निगेटिव माइनस y log x. अभी देखिए यहाँ पे ऑप्शन में यहाँ पे y है तो यहाँ पे भी y दिखाई दे रहा है, लेकिन y log x तो नहीं है, तो ये ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है ये दोनों रिजल्ट को, तो इसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. अभी सिंप्लीफिकेशन पार्ट बहुत अच्छी तरीके से देखिए आप, यहाँ पे x log y को ये अकॉर्डिंग टू इक्वेशन फर्स्ट x log y को y log x लिख सकते हैं हम. सो रिप्लेस दिस x log y बाय y log x. This simplification is just to match with some of our option. That's why we are simplifying it. और डिनोमिनेटर में भी देखिए ये y log x जो है y log x कैन बी रिप्लेस बाय x log y. अगर यहाँ पे x log y सब्स्टिट्यूट किया x log y, सो फ्रॉम न्यूमरेटर चेक दैट वी आर एबल टू टेक y कॉमन फ्रॉम बोथ द टर्म. y अगर कॉमन लिया तो ये y के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे मिलेगा y स्क्वायर और यहाँ पे बचेगा 1 माइनस log x. और डिनोमिनेटर में से अगर मैं x कॉमन लेता हूँ तो ये x इंटू एक्स विल बिकम x स्क्वायर, और यहाँ पे मिलेगा 1 माइनस log y. Check that is it our required C option. So in this case C option is our correct derivative of the given function. Now see the next example. In the next example given function is y is equals to sine of 2 sine inverse of x and we have to find out derivative. चलो हमने यहाँ पे फंक्शन कंसिडर किया है, यहाँ पे थोड़ा सब्स्टिट्यूशन करेंगे हम इजी जाने के लिए. सो आवर सब्स्टिट्यूशन इज पुट थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x, विच इम्प्लाइज दैट साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट x. ओके, चलो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन अगर कर लिया मैंने, दैट साइन 2, ये साइन इनवर्स ऑफ x की वैल्यू हम क्या सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं यहाँ पे थीटा. Okay, so now I am differentiating dy by dx. Try to understand it very carefully. लेकिन अभी यहाँ पे derivative of d by dx of sine 2 theta, isn't it? But here we can observe that this 2 theta cannot be differentiated with respect to x, क्योंकि यहाँ का वेरिएबल थीटा है, यहाँ का वेरिएबल x है, तो हम sin 2 थीटा को with respect to थीटा ही डिफरेंशिएट कर सकते हैं. तो इसलिए हम चेन रूल अप्लाई कर रहे हैं, d साइन 2 थीटा एज इट इज. ये डिनोमिनेटर में का जो dx है ये एक साइड में ले लिया हमने dx. अब मैं यहाँ पे d थीटा से डिवाइड कर रहा हूँ, इसलिए d थीटा से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ अकॉर्डिंग टू व्हाट चेन रूल. नाउ वी आर एबल टू डिफरेंशिएट साइन 2 थीटा, दिस साइन 2 थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा. व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन 2 थीटा? cos 2 थीटा into derivative of 2 theta will be equals to 2. और ये d theta by dx, इसका डेरिवेटिव d theta by dx means derivative of theta with respect to x means derivative of sin inverse of x. Its derivative is 1 upon under root 1 minus x square. तो ये d theta by dx की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी हमने यहाँ पे. सो 2 कीप इट एज इट इज. अगर मुझे ये सब्स्टिट्यूशन इस्तेमाल करना है तो cos 2 थीटा को इन टर्म्स ऑफ साइन कन्वर्ट करना पड़ेगा. सो अकॉर्डिंग टू डबल एंगल फॉर्मूला cos 2 थीटा कैन बी रिटन एज 1 माइनस 2 sin square theta. Just simply we have applied double angle formula. Under root 1 minus x square, keep it as it is. So 2 as it is, 1 minus 2 also as it is. Sin theta means x. So sin square theta means what? X square. और डिनोमिनेटर में यहाँ पे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. चेक दैट सच टाइप ऑफ रिजल्ट डज नॉट अपीयर्स इन एनी ऑप्शन, मीन्स अगेन वी हैव टू सिंप्लीफाई, मल्टीप्लाई बाय 2 टू बोथ द टर्म्स इन दिस ब्रैकेट. तो यहाँ पे देखिए 2 इंटू 1 क्या मिलेगा 2, और 2 इंटू माइनस 2 एक्स स्क्वायर इज माइनस 4 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. आई थिंक इट इज ए ऑप्शन. सो हियर वी कैन से दैट ए ऑप्शन इज द डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन.
Now see the example number 6. In this example, it is inverse trigonometric function tan inverse of x upon 1 plus under root 1 minus x square and sin 2 tan inverse of under root 1 minus x upon 1 plus x. जब भी रूट में अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आता है तो हमारा सब्स्टिट्यूशन होता है x इज इक्वल्स टू आइदर साइन थीटा और व्हाट कॉस थीटा. लेकिन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर या 1 माइनस एक्स तो हमारा सब्स्टिट्यूशन होता है x इज इक्वल्स टू कॉस थीटा. तो अब ये एग्जांपल सिंप्लीफाई करने के लिए बेटर वे हम दोनों जगह पे cos की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं. सो वी आर सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू व्हाट cos थीटा, बिकॉज इन फर्स्ट केस वी हैव टू चॉइसेस आइदर साइन और cos, लेकिन सेकंड केस में ये सेकंड पार्ट में cos ही सब्स्टिट्यूट करके इसे सिंप्लीफाई किया जा सकता है. तो हम दोनों भी इसमें यही एक ही सब्स्टिट्यूशन करेंगे बिकॉज इन लास्टली वी आर एबल टू रिप्लेस थीटा बाय व्हाट cos inverse of x. So this substitution we are using in our example. So which is equal to tan inverse of. अभी यहाँ पे न्यूमरेटर में x के जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, x इज इक्वल टू कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर में 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. जस्ट सिंपली वी आर रिप्लेसिंग x बाय कॉस, प्लस हियर साइन कीप इट एज इट इज, 2 also as it is, tan inverse also as it is. Here also we are replacing x by cos theta. In the denominator also we are replacing x by cos theta. Just simply we have substituted x is equal to cos theta. अभी ध्यान से देखिए यहाँ पे tan inverse of न्यूमरेटर में तो हमें मिलेगा cos थीटा. अब डिनोमिनेटर देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर इज साइन स्क्वायर. साइन स्क्वायर अगर रूट के बाहर आ जाता है तो वो बनेगा साइन थीटा. ओके, प्लस साइन as it is, 2 also as it is, tan inverse also as it is. Here in the numerator 1 minus cos theta can be replaced by 2 sin square theta by 2 according to half angle formula, और denominator में 1 plus cos theta will be equals to 2 cos square theta by 2. Just simply we have applied what half angle formula. So which is equal to tan inverse, keep it as it is. अब यहाँ पे भी ध्यान से देखिए हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में. अकॉर्डिंग टू हाफ एंगल फॉर्मूला दिस cos थीटा कैन बी रिप्लेस्ड बाय cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, और डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन थीटा अकॉर्डिंग टू हाफ एंगल फॉर्मूला विल बी इक्वल्स टू cos थीटा बाय 2 प्लस साइन थीटा बाय 2 होल ब्रैकेट स्क्वायर, इजंट इट. और यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, साइन 2 tan इनवर्स ऑफ. अब यहाँ पे 2 कैंसिल होगा, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर इज tan स्क्वायर थीटा बाय 2 आउटसाइड द रूट विल बिकम tan थीटा बाय 2, इजंट इट. वेल, सो विच इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ. अब यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना है आपको, न्यूमरेटर जो है कौन से फॉर्म में, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और डिनोमिनेटर कौन से फॉर्म में है, a प्लस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर, a प्लस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर. अभी न्यूमरेटर के फैक्टर मिलेंगे हमें a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और डिनोमिनेटर में a प्लस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर एज इट इज. ये a प्लस बी और स्क्वायर में से एक a प्लस बी क्या होगा, कैंसल. तो न्यूमरेटर में क्या बचा, a माइनस बी मीन्स वॉट, कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2, और डिनोमिनेटर में क्या बचा, a प्लस बी मीन्स कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2. होप यू आर गेटिंग इट. प्लस साइन कीप इट एज इट इज, here 2 also as it is. According to property of inverse trigonometric function, tan inverse and tan will get eliminated. Remaining term is theta by 2. तो यहाँ पे 2 भी क्या हो गया, कैंसल हो गया. So which is equals to tan inverse of. अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, I am dividing to this numerator एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा बाई 2. अगर मैं यहाँ पे cos थीटा बाई 2 से डिवाइड करता हूँ तो मुझे मिलेगा 1. साइन थीटा बाई 2 को cos थीटा बाई 2 से डिवाइड किया तो साइन अपॉन cos विल बिकम tan थीटा बाई 2. इन द डिनोमिनेटर cos थीटा बाई 2 से डिवाइड किया तो 1, प्लस यहाँ पे अगर cos थीटा बाई 2 से डिवाइड किया तो साइन थीटा बाई 2 अपॉन cos थीटा बाई 2 इज tan थीटा बाई 2, इजंट इट. और यहाँ पे सेकेंड टर्म हमारी है साइन थीटा. अभी देखिए यहाँ पे tan inverse as it is, so can I say that this is nothing but value of tan pi by 4
minus theta by 2. Yes, 1 minus tan theta upon 1 plus tan theta is value of tan pi by 4 minus theta, लेकिन theta की value यहाँ पे theta by 2 है. तो again according to property of inverse trigonometric function, tan and tan inverse will get eliminated. Remaining term is pi by 4 माइनस 1 बाई 2 एज इट इज. अब यहाँ पे जो थीटा है, ये थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए आप. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा हियर? थीटा इज कॉस इनवर्स ऑफ एक्स. थीटा इज व्हाट? कॉस इनवर्स ऑफ एक्स. प्लस पैरेलली मैं साइन थीटा को क्या लिख सकता हूं? अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा मीन्स एक्स, तो कॉस स्क्वायर बनेगा एक्स स्क्वायर. Okay, now the function is in the simplest form. Remaining part is just to find out its differentiation. So this is our function now which is in the simplest form. So dy upon dx is equals to, अब ये constant term का derivative हो गया 0 minus 1 by 2 as it is. cos inverse of x का derivative है minus 1 upon under root 1 minus x square. और यहाँ पे अंडर रूट एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, अंडर रूट एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन 2 रूट एफ ऑफ एक्स. एफ ऑफ एक्स क्या है यहाँ पे आपका? 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज माइनस 2x. ओके, सो विच इज इक्वल टू, अब यहाँ दोनों भी टर्म के डिनोमिनेटर 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर ऑफ बोथ द टर्म्स आर सेम. So that's why we are taking addition of numerator. चलो देखो यहाँ पे numerator माइनस इंटू माइनस 1 will be प्लस 1, और यहाँ पे plus 1 into minus 2x will be minus 2x. So here this will be our required differentiation which is appears in option C. So here we can say that C option will be our required derivative. Now see in the example number 7, we have to find out the derivative of this function log of x plus y is equal to 2xy. And we have to find out this derivative. Y dash means derivative. Derivative at x is equals to what? 0. Derivative at x is equal to 0. So first we are differentiating this function with respect to x. So here easily we can observe that the function is implicit function, and we have one shortcut method to find out derivative of implicit function, but for that purpose this right hand side should be 0. So plus 2xy on this side will become minus 2xy. Now we are differentiating it with respect to x using shortcut method. So first write down minus. चलो अब ध्यान से देखिए, इसका डेरिवेटिव निकालना है हमें विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कंसिडरिंग वाई एज एन कांस्टेंट. न्यूमरेटर में इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कंसिडरिंग वाई एज एन कांस्टेंट. नाउ फर्स्ट टर्म इज इन द फॉर्म ऑफ log f of x, so whose derivative is 1 upon f of x. f of x is what? X plus y into derivative of x plus y. Now derivative of x is 1 and derivative of y is constant term, so its derivative is 0, means derivative of this whole term is 1. So not necessary write 1 here, minus keep it as it is, 2y is a constant term, keep it as it is, and derivative of this x will be equals to 1, because in the numerator we are differentiating this function with respect to x considering y as an what? Constant. Now in the denominator we are differentiating same function with respect to what? With respect to y considering x as an constant. So first term is in the form of log f of x, so its derivative is 1 upon f of x into derivative of this f of x with respect to y. Derivative x is constant, so its derivative is 0, and derivative of this y with respect to y is 1, so not necessary 1 here. In the denominator, in the second term, 2x keep it as it is, because it is a constant term, and derivative of y is 1. 1 into 2x will be 2x. So differentiation is known to us, but question is to find out this derivative at x is equals to what? 0. At x is equal to 0, because we want the derivative at x is equal to 0. Now when x is equals to 0, at that time, see what value of y we are getting. We are substituting x is equal to 0 in this given function. If I am substituting x is equal to 0, so here we will get log y. And on this side, if I am substituting x is equal to 0, so 0 into any term is 0. So log y is 0 means implies that y is equal to 1, because we know that log of 1 to any base is always equal to 0. तो ये साइड में 0 है, इसका मतलब y की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए, because we know that log of 1 is always equal to 0 to any base. Base I am denoting by m here. Log of 1 to any base is always equal to 0. तो यहाँ पे 0 है, इसका मतलब यहाँ पे जो नंबर है 1 होना चाहिए, इसका मतलब y की वैल्यू 1 होनी चाहिए. So x is also known and y is also known, because
on this side x also there and y is also there, so that's why we will require both the values. Now we are substituting x is equal to 0 and y is equal to 1. चलो यहाँ पे x की वैल्यू 0 डाल दो और y की वैल्यू 1. So 0 plus 1 will be equals to 1 minus 2 into y, but y is 1, so 2 into 1 will be equals to 2. In the denominator also we are replacing x by 0 and y by 1, so 0 plus 1 will be equals to 1. x की वैल्यू यहाँ पे 0 डाल दी तो ये नेक्स्ट टर्म 0 हो जाएंगी. So in the numerator 1 upon 1 is 1, 1 minus 2, and in the denominator 1. So whenever we are using this shortcut method to find out derivative of implicit function, first we are writing what? Minus here. So already here I have written minus, just I forget to write down here minus. तो ये minus है यहाँ पे, ये माइनस में एज इट इज रखता हूँ. चलो न्यूमरेटर में 1 माइनस 2 विल बी इक्वल्स टू -1. डिनोमिनेटर में 1 लिखने की जरूरत नहीं है, सो -1 into 1 will be equal to +1. that's why we can say that 1 is the derivative of this function at x is equal to what? 0. In this way we have solved the example number 7th. Now see the example number 8. In this case it is given to us that g is inverse function of f and f dash of x is equal to 1 upon 1 plus x raised to power 7. Using this we have to find out g dash of x. So we are using given condition. What is given condition? G of x is nothing but what? Inverse function of f. Inverse function of f. It is given condition that g of x is equal to f inverse of x. I am just simply taking f function on both sides. So on this side we will get f of g of x, and on this side we will get f of f inverse of x. But according to property of inverse trigonometric function, f and f inverse will get eliminated. So on this side we will get x. So value of this whole term will be equals to what? X. Now we are differentiating it with respect to what? X. Derivative of f of g of x will be equals to f dash of g of x into derivative of g of x, that will be equal to g dash of x. And on this side derivative of x will be equals to 1. Now we are trying to find out value of f dash of g of x using this given condition that f dash of x will be equals to 1 upon 1 plus x raised to power 7. So observe here what we are doing here. x, ये देखो यहाँ पे x जो है ये यहाँ पे किससे रिप्लेस हो गया? g of x से. तो ये साइड में भी x किससे रिप्लेस हो जाएगा? g of x से. So value of f dash of g of x is 1 upon 1 plus g of x raised to power 7 into g dash of x. Keep it as it is. On this side 1 also as it is. So this implies that our required value is g dash of x. G dash of x is equal to, ये term divided है, ये साइड में आके क्या होगा? मल्टीप्लाई 1 plus g of x raised to power 7. In this way we have got the value of g dash of x, which is nothing but our required value, and this value appears in C option. So we have completed question number 8 also. Now in example number 9, this is the given function. Here easily we can observe that the given function is implicit function and we have to find out its derivative. We have one shortcut method to find out derivative of implicit function, but first we are simplifying this function. So try to understand how to simplify this function. So keep this first term as it is, x under root y plus 1 as it is. This plus term on the right hand side will become minus y under root x plus 1. We are squaring both sides. On this side we will get x square, and here if we are squaring second term, root will get eliminated. On this side square of minus y is plus y square, and here also root will get eliminated. We will get x plus 1. Now I am multiplying by this x square to both the term in this bracket. So what will get? X square y plus x square. Parallelly I am multiplying by y square to both the terms in this bracket. So x y square plus y square. So now this x square, keep it as it is. See here, x square, keep it as it is. This plus y square on this side will become minus y square. Again keep this x square y as it is, x square y as it is. This plus xy square on this side will become minus xy square. On this side remaining term is 0. So now again this function can be simplified. So again we are trying to convert it in the simplest form. Here easily we can observe that this first term is in the form of x square minus y square, whose factors are x minus y into x plus y. And if you will observe the next two term, can I take xy common? If we are taking xy common, so here we will get x minus y is equal to 0. Now I am dividing both sides by xy. If I am dividing both sides by xy will get cancelled. Remaining term is x plus y plus xy
is equals to 0. Now we are differentiating this function using the formula of, using which formula? Formula means shortcut method to find out derivative of implicit function. What we are doing here, first we are writing minus, then we are differentiating this function with respect to x, considering y as an constant in the numerator. So what is derivative of this x? Will be equals to 1. Y is constant, so derivative of y will be 0. यहाँ पे xy है तो y is constant and derivative of x is 1. 1 into y will be equals to y. In the denominator we are differentiating same function with respect to y considering x as an constant. अगर x constant है तो उसका डेरिवेटिव 0, y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y 1, और यहाँ पे x constant है तो x as it is रखो, y का डेरिवेटिव 1, y 1 into x will be equals to x. But till we can observe that such type of result does not appear in the option. Even if you observe these 4 options, so y does not appear, so we have to replace y by substituting its value. So 1 upon 1 plus x, keep it on one side. अब यहाँ पे ये न्यूमरेटर में 1 as it is, अब y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x फाइंड कर रहे हैं यूजिंग दिस रिजल्ट. चलो यहाँ पे y कॉमन लिया ये दो टर्म में से. इफ वी आर टेकिंग y कॉमन फ्रॉम these two terms, see what we'll get here. So here remaining term is 1 plus x, और ये जो plus x है ये साइड में होगा minus x, which implies that y is equal to minus x, keep it as it is. ये 1 plus x multiply इधर आके divided हो जाएगा. So in this way we have got the value of y in terms of what? X. So we have substituted value of y here. So which is equal to minus 1 upon 1 plus x, keep it as it is. Here we are taking cross multiplication, 1 plus x into 1 will be 1 plus x, and plus into minus x will be minus x, and in the denominator 1 plus x, keep it as it is. Here easily we can observe that plus x and minus x will get cancelled. In the numerator this minus 1 into plus 1 will be equals to minus 1, and in the denominator 1 plus x into 1 plus x will be square of 1 plus x. So minus 1 upon square of 1 plus x means B option will be the derivative of this given function. Now see the example number 9th. Here easily we can observe that this is inverse trigonometric function. So in such cases we are using substitution method to simplify this example. So here our substitution is x is equals to a cos theta. If I am substituting x is equal to a cos theta, let us see what we will get. Tan inverse of under root a minus a cos theta divided by a plus a cos theta. So which is equal to tan inverse, keep it as it is. Now here observe that a from numerator and denominator will get cancelled. Here will get 1, here also will get 1, and 1 minus cos theta will be 2 sin square theta by 2 according to half angle formula, and in the denominator 1 plus cos theta is 2 cos square theta by 2. Again easily we can observe that here 2 will get cancelled. So what we will get here, tan inverse of sin square upon cos square, it's tan square theta by 2, outside the root will become tan theta by 2. So here tan and tan inverse will get cancelled. So what is the simplest form? So theta by 2. So which is equal to 1 by 2, keep it as it is. Now I am substituting the value of theta. Observe here from this expression we are finding value of theta, x upon a is equal to cos theta. So implies that theta is equal to ये cos इधर आके क्या होगा, cos inverse, or simply we can say that we are taking cos inverse on both sides. So we will get this result. So I am replacing theta, this theta by its value. What is the value of theta? Just now we have got the value of theta is equal to cos inverse of x upon a. Now this function is in the simplest form. Let us try to find out its derivative. dy by dx is equals to 1 by 2 as it is. This function is in the form of cos inverse of f of x. So its derivative is 1 upon under root 1 minus 1 upon under root 1 minus square of x upon a, that will be x square upon a square into derivative of x upon a. Derivative of x upon a will be equals to 1 upon a. So which is equal to, in the numerator minus 1, keep it as it is, in the denominator 2 also as it is, under root. Now try to understand, if I am taking here cross multiplication, see what we'll get here. Nothing is there in the denominator, means 1 is there. A square into 1 is a square minus x square upon what, a square. लेकिन ये जो a square रूट के बाहर ले लिया तो उसकी वैल्यू हो जाएंगी a, और यहाँ पे 1 upon a as it is. So now here a will get cancelled, and what derivative we are getting here, minus 1 upon 2 under root a square minus x square. So will be our required derivative. So here we can say that C option will be the correct answer.
Now see in the example number 11th, value of x in terms of theta and y also in terms of theta is given to us, and we have to find out its second order derivative at theta is equal to pi by 4. So long method we have to use whenever we have to find out second order derivative of parametric function, and parameter is what? Theta. So here we have considered the value of x and value of y, which are nothing but given values. Now we are differentiating it, means we are finding first order derivative dy by dx, and we have one formula to find out derivative of parametric function, that is dy upon d theta divided by dx upon d theta. Means in the numerator we are differentiating y with respect to theta. So here this is the value of y, a keep it as it is. Now derivative of this sin theta will be equals to cos theta minus keep it as it is. To find out derivative of this term we have to apply product rule. According to product rule, keep first term theta as it is into derivative of second term, means derivative of cos theta will be minus sin theta, plus second term as it is, means cos theta as it is, into derivative of first term, means derivative of theta is 0. So now in the denominator we are differentiating this x with respect to theta. This is the value of x and we are differentiating it with respect to theta. A keep it as it is. What is derivative of cos theta? That is minus sin theta, and here plus as it is. Now to find out derivative of theta sin theta we are applying product rule. Keep first term theta as it is, derivative of sin theta is cos theta, plus second term means sin theta as it is into derivative of first term, means theta will be equals to 1. So differentiation is completed. Now remaining part is simplification. Here we can observe that this plus cos theta and minus into cos theta, means minus cos theta will get cancelled. Here a and a will also get cancelled. So in the numerator, minus into minus, that will be equals to plus theta sin theta will be the remaining term. And in the denominator, after cancelling plus sin theta and minus sin theta, remaining term is theta cos theta. So after cancelling theta and theta, sin upon cos will be equals to tan theta. So this is the value of first order derivative. Now we are finding second order derivative, means we are differentiating dy by dx. d2y by dx square means derivative of what? dy by dx. So which is equal to d by dx, keep it as it is. I am replacing dy by dx by its value. What is the value of dy by dx? Just now we have got its value will be equals to what? Tan theta. Now here easily we can observe that this tan theta will get differentiated with respect to what? Theta, but we are differentiating it with respect to x, which is not possible. So in such cases we are applying chain rule. So d tan theta, keep it as it is, and in the denominator this dx I am writing on this side into dx. Just simply I am dividing by d theta, that's why I am multiplying by d theta. This adjustment we are able to do applying what? Chain rule. So well, now derivative of tan theta with respect to theta will be equals to sec square theta. And now try to understand, we are substituting the value of d theta by dx. ये डिनोमिनेटर में की जो वैल्यू है, ये डिनोमिनेटर ये किसकी वैल्यू है? dx by d theta. हमें dx by d theta नहीं चाहिए, इसका रेसिप्रोकल चाहिए. देखो यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल d theta by dx. चलो इसका रेसिप्रोकल बताओ. यहाँ पे a, ये साइन तो कैंसिल हो गया, a इंटू थीटा कॉस थीटा, उसका रेसिप्रोकल होगा 1 upon a theta cos theta. So which is equals to, now try to understand here, cos in the numerator means after taking reciprocal of cos, here in the numerator will get sec, and sec into sec square will become sec cube theta, and in the denominator remaining term is what? Remaining term is a theta. But we have to find out this second order derivative at theta is equal to how much? Pi by 4. Observe the example, pi by 4 means 45. चलो यहाँ पे थीटा की वैल्यू अगर 45 सब्स्टिट्यूट की तो sec 45 is √2, और √2 का क्यूब means √8 can be written as 2 √2, and in the denominator a as it is, again I am replacing theta by its value pi by 4. अभी क्या होगा? ये 4 न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ. So 4 into 2 will be 8 √2 upon a. Now nothing is there to simplify, and here easily we can observe that 8 √2 upon a pi, sorry I have forget here to write down the pi, a pi. So will be our required derivative of this given function.
Now let us try to solve the last example from this miscellaneous exercise. Here given function is y is equal to a cos log x. Here we have considered this function and we have to find out the value of this expression. In this expression, term of dy by dx and d2y by dx square appears. Means we have to differentiate this function 2 times to find out second order derivative. So let us differentiate it with respect to x. So dy upon dx will be equals to, a is a constant term, keep it as it is. What is derivative of cos f of x? Will be minus sin f of x. f of x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? log x into derivative of log x, that will be equal to 1 by x. ये डिनोमिनेटर में क्या x इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो इधर मिलेगा x dy by dx is equal to minus a sin log x, isn't it? Now on this side we are to find out the derivative, we have to apply product rule. According to product rule ki first term as it is, then derivative of second term means derivative of dy by dx is d2y upon dx square, plus second term as it is means dy by dx as it is into derivative of first term means 1, and on the right hand side minus a, keep it as it is. What is derivative of sin log x? Derivative of sin log x is cos log x into derivative of this log x, that will be equals to 1 by x. So ये जो डिनोमिनेटर में x है इससे मल्टीप्लाई कर लो, ये इधर डिवाइडेड है तो लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा. चलो x इंटू दिस x विल बी एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर. सेकेंड टर्म को अगर x से मल्टीप्लाई किया तो x dy by dx, एंड ऑन द राइट हैंड साइड माइनस a cos log x, keep it as it is. Now here easily we can observe that this a cos log x, if you observe the given example, a cos log x is nothing but y. So replace it by y. तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें? x square d2y upon dx square plus x dy by dx is equal to minus y. Now minus y on the left hand side will become plus y. चलो ये माइनस y अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करते हैं तो इट विल बिकम प्लस y यूजिंग रूल्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. इन दिस वे वी हैव गॉट सच टाइप ऑफ एक्सप्रेशन विच इज गिवन इन द एग्जाम्पल. इफ विल कंपेयर दिस एक्सप्रेशन with this expression, we will come to know that a means coefficient of d2y by dx square, so it will be equals to a square means a will be equal to x square. Coefficient of dy by dx is denoted by b here and its value is x. By comparing these two equations we can say that b is equal to x, and lastly c is nothing but here y, so c is equal to y. In this way we have got our required value abc. Abc is equal to what? X square, x and y respectively, and here we can observe that such value of abc are given in option b. So here we can say that b option is the correct answer. In this way we have solved all multiple choice questions from this miscellaneous exercise. If you think that these videos are very helpful to you, so please like the videos and share these videos with your friends also.